that you can see what exactly is going to be the discussion topic for today's session. But wishing you all a very good evening and Jai Hind to all. Okay. So the topic for the session is unlocking potential, nurturing children's talents through a multifaceted parenting approach. Now, you must be very clear by the topic itself that what we are going to exactly talk about and how it is going to help you. Basically, जब हम बच्चों की बात करते हैं पेरेंटिंग की, so there are many things when यदि हम एज अ टीचर अप्रोच को सोचें और हम अपने अप्रोच को एज अ पेरेंट सोचें, ये दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। एक टीचर जब पेरेंट होता है और एक टीचर जब किसी को प्रीच करता है, इन दोनों सिचुएशन में उनका जो अप्रोच होता है उनका जो स्टाइल होता है, वो कहीं ना कहीं यू नो थोड़ा थोड़ा डिफर कर जाता है। ठीक है, सो आई जस्ट टेक जब हम मल्टीफेसेटेड पेरेंटिंग अप्रोच की बात करते हैं, तो देर आर सम सिचुएशंस व्हेन वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड दैट बच्चों की टैलेंट को कैसे नर्चर करना है। और अक्सर टीचर बहुत अच्छा हो, बट यदि पेरेंट्स का सपोर्ट इफेक्टिव ना हो, पेरेंट बच्चे को बहुत कॉपरेट ना करे, पेरेंट के लेवल से सपोर्ट ना हो, तो भी एक प्रॉब्लम होती है। अक्सर जब टीचर बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो और पेरेंटल सपोर्ट ना हो, तो उस सिचुएशन में बच्चे के ऊपर इसका एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिस इज समथिंग जहां पे हम बच्चे की पोटेंशियल, जो उसकी बेसिक पोटेंशियल है, जो उसके अंदर उसकी मूलभूत ताकत है, यू नो, टू ग्रो दैट चाइल्ड इनटू दैट पर्सपेक्टिव, it's somewhere we have to look into the parenting approach of the child as well. Now, parents का जो parenting approach होता है, there are four types of parenting approach. What are the four types? So the very first is authoritarian, the second is authoritative, the third is neglective, and the fourth is permissive. So when we talk about four types of parenting style, so four types of parenting style spoken by Bamurand. So what she basically talk about in her parenting style is the four different aspects of parenting. When a parent is somewhere, in terms of helping the child, okay, so that goes to authoritarian. When a parent is in terms of not giving approach and right support to the child, so that is somewhere neglectful. When the parent has nothing to do whatever the child is doing, whatever my child is doing, बच्चा कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो that is somewhere like permissive. So this is something जहाँ पे we have to understand that parent का जो parenting style है, वो कहीं बच्चे को impact डालता है और कैसे डालता है, that is also to be taken care of. So द फर्स्ट थिंग जो मुझे आपको सबसे पहले डिस्कस करनी है, दैट इज विच इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट
जब 8 से 12 साल की उम्र के बीच का बच्चा होता है, तो उसके बेसिकली दो डेवलपमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड सेकंड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. So when we talk about both type of development, somewhere we have to understand that both the stages are very crucial. So uh, if I talk about what are the cognitive like what are the social and emotional development. So social and emotional development as a psychological development between the age of 8 to 12. So basically somewhere it has a direct connection with the growth of the child. Like बच्चे के social और emotional level पे यदि उसको effective support ना दिया जाए, उसको effective help ना provide की जाए, तो कितनी भी कोशिश की जाए, it somewhere affects. So you have to somewhere think about, like between the ages of 8 to 12, like children undergo significant social and emotional development, and they start forming deeper friendship. They start forming deeper friendships, understanding social norms, and developing a sense of self. Like uh, 4 साल 5 साल का बच्चा मैं और मेरे अस्तित्व के बारे में इतना बात नहीं करता जितना कि 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल का बच्चा बात करता है. सो कहीं ना कहीं बच्चे एक डीप फ्रेंडशिप को लेकर के एक फ्रेंडशिप को थोड़ा डीप लेवल पे लेके जाने लगते हैं. सोशल नॉर्म्स को समझने लगते हैं कि यहाँ पे ये चीज एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, इस चीज का ये इम्पैक्ट है, इस चीज का ये इम्पैक्ट नहीं है. एंड कहीं ना कहीं वो अपने सेंस ऑफ सेल्फ को, आई एम ऑल्सो समथिंग वाली फीलिंग को भी कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं. सो it has a connection with their social this thing. Also, kahin, if we do not teach them like regular emotional self-regulation in a better way, there are multiple issues as well. So emotional regulation improves and they become more capable of empathy and perspective taking. Also, in the age of 8 to 12, somewhere peer relationships becomes increasingly important and influencing their social skills and emotional well-being. So what are the cognitive development in the age of 8 to 12 of a child? So when we talk about cognitive development, let me bring it to your knowledge. Cognitive development का मतलब क्या होता है? So cognitive development is something where uh, thinking, analyzing, understanding, comprehension of something. So this goes under that. So in the age range of 8 to 12, right, children experience, notable cognitive development, like they refine their thinking abilities as well as enhancing logical reasoning, problem solving skills and memory. So cognitive tasks become more complex and there is a growing capacity for abstract thinking. Abstract thinking is like, if I ask you the difference, the common thing between helicopter and plane, right? So there is the use of your abstract thinking. There you have to think from the abstract perspective. So additionally, academic skills such as like reading, writing, and mathematical abilities, so it tend to improve significant during this period. So this is somewhere where we talk about psychological development of a child. We somewhere try to understand that the child is cognitively also developing. So a parent has to be aware of it. But why I'm talking to teachers about parents being aware of it? Because आप जब एज अ टीचर किसी को फीडबैक देते हैं और आपके पास फीडबैक देने का टर्मिनोलॉजी यदि एक लेमैन जैसा है, तो द पेरेंट वोंट टेक इट वेरी सीरियसली. So you have to use some important terms. You have to make them understand that उनको जो चीजें आप बता रहे हैं वो कहीं से important है, और they will listen to you only and only if you have something, something to reference, something to quote there. So quoting something there is very important. So this is what I was talking about. So basically I told you about the emotional and social development and also the cognitive development thing.
Next is going in detail about the cognitive development. So what are the things we need to take care of? So आपको क्लास में क्या ध्यान रखना है और पेरेंट को क्या समझाना है कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए वो ध्यान रखें. सो द वेरी फर्स्ट इज फोस्टरिंग क्यूरियोसिटी. ज्यादातर पेरेंट्स और आई वोंट से टीचर्स इस चीज को बहुत इफेक्टिवली और बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जब वो किसी बच्चे की क्वेश्चनिंग स्किल्स पे उसको काउंटर क्वेश्चन करके या उसको थोड़े निग्लेक्टफुल तरीके से उसको चुप करा देते हैं. डोंट डू दैट, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, डोंट गो अहेड विद दिस, समथिंग लाइक दैट. सो व्हेन दे say something like that, it somewhere affect them. So it is very important to foster curiosity in children, and curiosity is something which is always and in all ways attached to the questioning skills of the child. Like the more the child asks questions, there comes the curiosity. And people generally avoid answering questions. So what they do, they generally just end up with saying something, अरे ये बेकार है, पता नहीं क्या क्या की फालतू की चीजें पूछता रहता है, अरे it is not good for you, something like that. So these sort of things should be avoided. So when you want really your child to grow cognitively, so you have to somewhere foster curiosity in the child. How you can support to that child? So somewhere support a child's interest in science by promoting simple experiments or nature exploration in the backyard. Something जैसे आपके घर पे कोई गार्डन है, बच्चे को मे बी एक छोटा सा बीज है ना, चना दिया, उसको फुला दिया, चने को फुलाने के बाद उसको थोड़े गीले पानी, हल्के गीले कपड़े में रख करके उसके अंकुरित होने की प्रोसेस दिखाई. द चाइल्ड विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है, अब अंकुरण क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रोसेस, एंड आफ्टर दिस व्हेन यू विल पुट इट इन द सॉइल, जब मिट्टी में इसको रखेंगे तो धीरे 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 उसमें से अंकुर फूटेगा, एक छोटा सा पौधा निकलेगा, दैट छोटा सा पौधा विल ग्रेजुअली बिकम नन्हा सा पौधा बड़ा पौधा होगा, एंड इट विल ग्रो. So this sort of learning will be an experiential learning, and it will improve curiosity in the child, in place of just downloading a video, showing it on the back like a smart board, that this thing will happen and the child will go like that. So ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड जब आप इस तरीके के टास्क पेरेंट्स को समझाते हैं कि सर बच्चा जो गाजर मूली खा रहा है, बच्चे को उस गाजर मूली को या जो है अपने थाली में चावल छोड़ देने की कीमत नहीं पता है. जैसे आई एम शेयरिंग यू वन ऑफ माई एग्जाम्पल. ऑफ कोर्स आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, सो आई गिव प्रैक्टिकल टास्क टू पेरेंट, बट आई टेक इट एज अ चार्ज. आई टोल्ड टू अ पेरेंट सेड कि सर मेरा बच्चा खाना बहुत फेंकता है. सो आई सेड कि क्या फेंकता है, कि सर जो भी खाएगा उसको थोड़ा फेंकना ही फेंकना है. आई सेड आप कुछ नहीं, आप उसको थोड़ा सा यू नो जो हमारे गेहूं की फसल से जो होता है, ठीक है, सो आप उसको थोड़ा सा अंकुरित गेहूं को उसको बो करके दिखवाइए, और उसको ये दिखाइए कि कैसे धीरे 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 फसल जो है वो कन्वर्ट होती है. सो उसने जो अपना जौ बोया and उसके बाद उसमें चीजें हुई, एंड प्रॉपर वो ग्रो करने में इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ मंथ. एंड एक छोटे से गमले में जब बच्चे के प्लेट में 15-20 लगभग 60-70 दाने गेहूं के खाली आए, और उसके फादर ने कहा कि यदि हम इसको पिसवाएंगे तो शायद इससे आधी रोटी भी ना बन पाए. सो द चाइल्ड रियलाइज्ड कि यार आई एम वेस्टिंग एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स. पैरेलली द फादर हेल्प्ड, उसको मटर के बीज लगा के दिखाया, उसको गाजर की फसल छोटा, और आपको कुछ नहीं करना है कि आपको उसके लिए बहुत बड़ा 2-4 हजार स्क्वायर फीट उसके लिए लैंड चाहिए. इट इज अ स्मॉल पॉट, आप उसको स्मॉल पॉट में दिखाइए कि बेटा वॉट एवर यू आर वेस्टिंग इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस वे, इट इज वेरी टफ. तो एक गाजर यदि उगी और उस गाजर में उसका एफर्ट लगा, तो चाइल्ड विल अंडरस्टैंड. सो देयर कम्स द क्यूरियोसिटी वाला पार्ट, राइट. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड problem solving abilities. So somewhere children can solve multi-step maths problem or use logical reasoning in decision making. Now हम ये चाहते हैं कि बच्चा क्लास में बैठ करके, घर पे बैठ करके होमवर्क करे,
बट पैरेलली यदि हम पूरे घर की ग्रोसरी बिल लेकर के बैठे हैं, बिग बाजार से शॉपिंग करके आए, स्मार्ट बाजार से शॉपिंग करके आए, स्पेंसर से शॉपिंग करके आए, उस दुकान से आधा किलो मैदा, पाव भर चीनी, 100 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम धनिया पाउडर, ये चीजें लेकर के आए। नाउ आई कैन आस्क माई चाइल्ड टू राइट डाउन कि बेटा देखो, मूंग का मूंग का, मसूर का और मूंगफली का ये डिफरेंस है, सूजी चने और बेसन का ये डिफरेंस है, ये चीज इतने रुपए किलो आई, ये चीज इतने रुपए की इतनी मिली, इसको जोड़ो कितना हुआ, इसको जोड़ो घटाओ कितना हुआ, इतना पैसा मैंने दुकानदार को दिया था, उसको मुझे कितना वापस करना चाहिए था, इस पे इतना परसेंट का ऑफर मिला, इस पे इतना परसेंट का डिस्काउंट मिला। ये बेसिक चीजें जब यदि बच्चा सीखने लगेगा, देयर विल बी हाई देयर विल बी high chances when a child will somewhere understand कि उसके पास लाइफ स्किल्स होंगी। बच्चे को लॉजिकल रीजनिंग सिखाने का ऑब्जेक्टिव, हम मैं अक्सर पेरेंट्स से सेशंस करता हूँ, टीचर्स के, तो मैं पूछता हूँ कि बच्चे को स्कूल आखिर क्यों भेजते हैं। एंड कोर ऑफ द डिस्कशन कम्स कि वो समझदार हो जाए। लेकिन समझदार तो हम बचपन से नहीं होने दे रहे, क्योंकि हम उसको कोई ऐसे टास्क देते नहीं जहां पे उसकी समझदारी का उसको रियलाइजेशन हो। So critical thinking, like through puzzles, riddles और strategy game, इस तरीके की चीजों से थोड़ा हेल्प देने पे the child will grow and will somewhere understand कि उसकी लाइफ में जो चीजें हैं वो क्यों हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। एंड कहीं ना कहीं, if you don't focus on this thing, this somewhere affects the child in terms of overall growth. Are you liking the session, everyone? Are you liking the session? Is the content is appropriate? Just show me a thumbs up, or you can show some emojis. That will help me. Yes, yes. Good. So that's what I wanted to add. Now coming to the social and emotional development. So when we talk about social and emotional development, what exactly social and emotional development means here? What I want to have to add here. So somewhere you have to emphasize the importance of play dates or group activities that encourage teamwork and cooperation. So social and development, emotional development में what we can do. What can we do for social and emotional development of a child as a teacher as well as a parent? सो वट एवर आई एम सजेस्टिंग यू, मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एज अ टीचर हेल्पफुल है, ताकि आप बच्चे को क्लास में कुछ बता पाए, और उसके इस पर्पज से भी जरूरी है कि आप उसके पेरेंट्स को सजेस्ट कर पाए कि वो क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, राइट? सो द वेरी फर्स्ट इज, एज अ टीचर एंड पेरेंट समवेयर like fostering emotional development, it involves like first of all creating supportive environment, and another is engaging in specific activities, as well as creating supporting environment. जस्ट ये गाना, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है, दिक्कत बहुत है, कोई समझता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता है, कंप्लेनिंग मोड से बच्चे को कहीं ना कहीं हम ये सिखा देते हैं कि यू हैव टू गिव अप, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन योर लाइफ। सो डोंट हैव टू गो विद दिस। ask the child ask the child that if the environment is not according to you, what you are doing to make an environment according to you. You have the ability, to create supportive environment. You have the ability to create supportive environment, but you cannot if you don't wish to. So this is something very important. So the very first thing which you can do for social and emotional development, the very first is encourage expression. Encourage expression. Like, create spaces where children feel comfortable expressing their emotions. Encourage them to share their thoughts and feelings openly. Like you can do something, maybe आप क्लास में एंटर किए, एंड देयर आर सम सिचुएशन वेर यू फेल्ट दैट सब बच्चे उसी मोड में बैठे हुए हैं, सो यू कैन से टेक ऑफ योर टेबल एवरीवन, टेक योर चेयर्स आउट, हम लोग एक सर्किल बना करके आज बैठ करके पढ़ाई करेंगे। दिस इज क्वालिटी सर्किल टाइम। यू आस्क
तुम्हारी दीदी की शादी होने वाली थी, उसमें क्या ऐसी चीज रही, तुमने कौन कौन से स्किल्स सीखी, तुम्हारे घर ये फंक्शन हुआ, तुमने इसमें क्या क्या चीजें सीखी, तुम्हारी लाइफ में ये लॉस हुआ, तुमने उससे क्या लर्न किया. चिल्ड्रन ग्रो व्हेन दे डिस्कस. बट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी डू नॉट इनकरेज मच, बिकॉज हम लोग की एक बहुत कॉमन जो बीमारी है, दैट बीमारी इज दैट ज्ञान शुड गो ऑन. And the problem is that you will be giving ज्ञान, but the child is not in a mode to receive it, because उसका पात्र पहले से भरा हुआ है, और उसके पात्र में चीजें भर कहाँ से रही हैं. So this is all coming through mobile media and everything, and everybody is saying मोबाइल बच्चों को बिगाड़ रहा है, मोबाइल बच्चों को बहुत नहीं देखना चाहिए, बहुत खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है, बड़ा बेकार है सर, बहुत बेकार है, इसने सब बर्बाद कर दिया. बट हम लोग बस ये कह रहे हैं, we are not taking any action for it. So this is something जहां पे it is very important to somewhere take some steps. माँ बाप ये कह करके टीचर के आगे बच जाते हैं, सर ये मेरी बात नहीं सुनता है, और टीचर ये कह करके बच जाता है कि ये घर से पढ़ाई नहीं करके आता, तो हम इसको और आगे कैसे बताएं. मुद्दा अगेन इज द सेम, कि बच्चा इज हैप्पी whether not the parents have courage to stop the child, nor the teachers are motivating the child to do that. So encourage expression. बहुत सारी चीजें लाइफ की ऐसी होती हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम कहते हैं, जब हम बताते हैं, so it helps us to, you know, ऑर्गेनाइज आर इमोशंस फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, और चीजें अपने आप धीरे धीरे सॉर्टेड होने लगती हैं. बट द प्रॉब्लम इज that we do not encourage much, so it is very important to give them some encouraging expressions options. Also teach empathy. Like, empathy word is very common of all my sessions. Of course, as a psychologist I must say that always, but yes, you have to help children understand and appreciate others, you know, like perspective of other people, like discuss emotions in various, situations, and encourage them to consider how others might feel. And this is very important, because when they understand the importance of मेरे शब्दों से दूसरा कैसा फील करेगा, जहाँ ये एम्पैथी डेवलप होती है, children start learning a lot of social and emotional development skills. So this is very important to understand and somewhere help them. Also promote positive relationships, like facilitate, positive interactions with peers and adults. Encourage, teamwork, communication, and problem solving skills through group activities. So what could be the group activities? So group activities could be anything which suits to your school, to your class, but you have to have a mindset to somewhere promote that they should get engaged and involved with each other, and this will somewhere promote a positive relationship in the group part. Also, uh, it's the right time and the right platform to say that modern healthy behavior, like, you have to demonstrate positive social and emotional behavior, and children often learn by observing. So modeling empathy, patience, and effective communication is crucial. If we as a teacher, if we as a parent, if we won't model healthy behavior, of course it will somewhere reduce the level of respect, as well as the child will learn by observing. Because हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने हमसे बड़ों को देख करके सीखा है. हमने उनको देख करके सीखा है जिनके ऊपर कभी हमारी जिम्मेदारी हुआ करती थी. सो दिस इज समथिंग जहां पे वी हैव टू हैव दिस एबिलिटी टू, मॉडल हेल्दी बिहेवियर. Also provide constructive feedback. Their teachers, it is very important to help children in their social and emotional development, but you have to try hard to provide constructive feedback.
मैं बहुत सारे केसेस देखता हूँ, चाहे वो बच्चे का मम्मी की बात ना सुनना हो, चाहे बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी हो, चाहे सास बहू का झगड़ा हो, चाहे पति पत्नी का झगड़ा हो, चाहे किसी के घरेलू कोई कंसर्न हो, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे पेरेंटल प्रॉब्लम हो, एंड इन एवरीवेयर एंड in every discussion, I just find one thing very common, that is the important, center point for the conflict is not providing constructive feedback. The both people love each other. The husband loves wife and the wife loves husband. The mother loves the son loves mother. All good, all fine, all very nice. But the problem is, the moment they open their mouth, they don't know how to speak. And they end up with saying, हम ये नहीं कहना चाहते थे, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो. So this is very important, and this is very important to understand, that when you do not provide a constructive feedback, it really doesn't help. किसी भी दो व्यक्ति के बीच की बात बढ़ती ही तब है जब बात होती है, चाहे वो पेरेंट्स का बच्चे से झगड़ा हो, चाहे वो किसी का किसी से किसी रीजन को लेकर के कोई बहस हो, वट एवर द थिंग इज. बट समवेयर द इशू इज दैट वी डू नॉट encourage कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मेथडोलॉजी. हम लोगों को पता नहीं कौन सी चीज जल्दी रहती है, कौन सा खरगोश ऐसा मन में भागता है कि नहीं नहीं, पहले इसको बता दो, पहले ये बात बता दो, फिर बाद में देखेंगे. एंड देन वी लेटर ऑन वी एंड अप एंड विथ सेइंग, हम ये मीन नहीं कर रहे थे. बट हमारे शब्द और उनके मायने, ये हमारे बोलने के तरीके से बदल जाते हैं. इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है, चाहे हम किसी छोटे बच्चे को फीडबैक दें, चाहे हम किसी बुजुर्ग को फीडबैक दें, चाहे हम बुजुर्ग होके अपने किसी भी उम्र के व्यक्ति से बात करें. दुनिया में किसी भी उम्र का व्यक्ति का किसी भी उम्र के व्यक्ति से जो कनेक्शन है, यदि इफ देयर इज अ गुड कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एवरीथिंग गोज सो वेल. Everything goes so well. It is very, very, very important to take care of. Another is teach conflict resolution for social and emotional development. Somewhere, try to equip children with skills to resolve conflicts peacefully. And I ask, everybody sitting in my session is an adult, and I just say this here to you all. Just try to look from this perspective. Whenever a husband and a wife come after a fight and they have something, and they discuss with me, I say that when the baby took birth on this earth, जब आपके बच्चे ने इस धरती पे जन्म लिया, वो रोया और डॉक्टर को पता चला और आपको बाहर पता चला. लेकिन वह बच्चा जिस समय पेट में आया था, ये दुनिया को नहीं पता था कि वो कब किस समय कहाँ आया. लेकिन जब आप दोनों के एक दूसरे से इमोशनल बॉन्ड अच्छे नहीं हैं, तो ये पूरी दुनिया को पता चल गया. सो लुक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. जब एक बंद कमरे में शांति से प्यार हो सकता है, तो एक बंद कमरे में शांति से किसी बात और किसी तकरार को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता. बट द इशू इज, आप कह रहे हैं कि इन्होंने आपकी इज्जत खराब की, और वो कह रही है कि इसने मेरी इज्जत खराब की, और काम दोनों का है, जिम्मेदार दोनों है, क्योंकि जिसने भी खींच के बाहर लाया, अगला बाहर आया, इसीलिए बात बढ़ी. सो दिस इज समथिंग हाउ द थिंग्स गोज. सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए स्किल्स होनी बहुत, और पीसफुल, किसी चीज को पीसफुली हैंडल करने की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टीच देम हाउ टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स, लिसन टू अदर्स एंड फाइंड कॉम्प्रोमाइजेस. Also, somewhere consistency, and for children I always encourage playing. आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो मोबाइल पे बिजी रहते हैं.
उससे बड़ी समस्या ये है कि उनसे बड़े वालों के लिए मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने खेला कि नहीं खेला फर्क नहीं पड़ता। बच्चा कहीं कहाँ पे गया और उसने क्या बिहेवियर किया, क्या लर्निंग की, फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज द मेजर कंसर्न। सो इनकरेज योर चिल्ड्रन टू प्ले। नाउ एक दूसरा जो इसमें हम लोग जो एक दूसरा थॉट प्रोसेस हम लोग इसमें खोज के रखते हैं, जो एक दूसरा थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आ जाता है, दैट इज समथिंग कि यू नो लाइक what should I say? Yes, I just want to say that जो बच्चों के सोशल स्किल्स हैं, वो बाहर खेलना, चालू आप सोचिए हमारे और आपके बचपन के बारे में यदि आप सोच करके देखिए। सो मेरा और आपका बचपन वो बचपन था जब हम गिल्ली डंडा भी खेलते थे, इक्कड़ दुक्कड़ भी खेलते थे, पकड़म पकड़ाई भी खेलते थे, और सांप सीढ़ी भी खेलते थे, लूडो भी खेलते थे, चेस भी खेलते थे, और ये सारे गेम राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते थे, बर्फ पानी खेलते थे, छुपम छुपाई खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे। क्या उस समय सोसाइटी में इतना रिस्क नहीं था? रिस्क तब भी था, लेकिन तब हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए बाहर खटिया पे बैठी एक दादी अम्मा काफी होती थी। समस्या अब यह है कि घरों में दादी दादा घरों के अब जो है वो वृद्धाश्रम शिफ्ट होने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक मेजर कंसर्न है। बट बच्चों का प्ले, बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशियल। सो इफ चिल्ड्रन डू नॉट प्ले मच, इट रियली डजंट हेल्प। आई स्वेयर इट रियली डजंट हेल्प। तो कहीं ना कहीं आज जो भी गेम्स टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं, या आज जो भी गेम्स ऑनलाइन हो गए हैं, वो इसीलिए हो गए हैं क्योंकि ऑफलाइन गेम खरीदना लोगों ने बंद कर दिया है। सो दिस इज समथिंग जहां पे वी हैव टू इनकरेज। So playing game is very important for the social and emotional learning, and collaboration with parents. Like, maintain open communication with parents to ensure consistency between home and school environment. And, share insights like and strategies for supporting the child's social and emotional development. So whatever strategy the parent says, "And I'm trying this, I'm trying that, I'm doing this, I'm doing that," it's okay. You're doing it very good. Let me know how can I help you with that. Sir, I'm trying this in a school. Parent can say, let me know how can I help you in that. So this is something where social and emotional is very important. And I'll feel bad to say, but it's a big fact. And in society, the major problem today, what exists is social and emotional development, is not taken that seriously. A school environment cannot change your child completely. The child has have to have a environment at home as well, and who will teach the parents that the home environment is very important and it affects. So that's the role of the teacher as well. You can call for PTM, you can call for parent orientation program, you can have some different like you can invite some speakers, you can invite a psychologist, you can invite a counselor, you can request your head to talk to the group of teacher and all, and they can discuss about the things. You can invite a person as a guest that this thing is there, and let us address it. क्योंकि कई बार चीजें हमें पता ही नहीं होती हैं, और हमें लगता है कि ठीक है समय के साथ ठीक हो जाएगा। बट हर चीज दुनिया में समय के साथ ठीक हो जाती तो कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती ही नहीं। सो दिस इज समथिंग जहां पे हमें हमारे एक्शंस और इमोशंस के लेवल पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। सो दैट इज समथिंग विच वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ। When I talk about yes, when you talk about the thing multiple intelligences, so I just would like to request you, uh, yes, anyone, how's the thing? How's the session there? You can write some good feedback in the thing so that I can motivate myself, and of course, I can just carry on with the discussion. So let me just
Yes, thank you so much for your feedback. Let us talk about multiple intelligence. How does multiple intelligence can help, and what is the approach which can help us to understand the concept of multiple intelligence? So Howard Gardner is a person, and I just want to start with this. I'm very blessed. I'm very blessed that I have got an opportunity to work with Howard Gardner under Harvard University, and the project Zero, good project, which I was virtually attending. Still, my project work is in progress. So, I have got a certification from Harvard University for completing the good project with the children using the multiple intelligence and the like approach of how does multiple intelligence can help. And this is what my approach is being there. So, it's all blessings and grace of God. So, Gardner's theory simply say and talks about, you know, illustrate how different intelligences manifest in children, such as a strong kinesthetic abilities in sports or dance. Also, so कोई एक बच्चा जैसे बचपन में कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब खेलोगे कूदोगे होगे खराब. For that time it was okay. For that time it was okay. But at present this is not okay. How? आज के टाइम पे पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे कूदोगे मोबाइल चलाओगे यूट्यूब के वीडियो बनाओगे यूट्यूबर बनोगे कुछ भी करोगे होगे नवाब. दिस इज द सिंपल कंसेप्ट. बस ड्यूटी डिवोशन और डिसिप्लिन के साथ लगे रहो. सो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो अप्रोच है वो ये कहता है कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो किसी एक चीज पर फोकस्ड नहीं है. वो लगभग 8 में से किसी एक फेज पे कहीं ना कहीं जो है वो बैठती है. द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एबिलिटीज. सो आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स का ब्रेक. थैंक यू फॉर ऑल द पॉजिटिव कमेंट्स एंड फीडबैक. लेट मी टॉक अबाउट दी अनदर थिंग. सो पहला हो गया स्पोर्ट्स. दूसरा हो गया दूसरा हो गया आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल एबिलिटीज. सो कहीं ना कहीं वी हैव टू encourage painting interest with art supplies and art classes. How it can help the children? This can help the children to show their abilities. देखिए ड्राइंग सब बना सकते हैं. किसी की ड्राइंग ऐसी होगी जिसको देख के सब हंस देंगे और किसी की ड्राइंग ऐसी होगी जिसको देख के सब कहेंगे वाह क्या बात है. इसका मतलब कि भगवान ने सबके अंदर सब एबिलिटीज दी हैं, लेकिन जिसकी जो एबिलिटी ज्यादा अच्छी है, यदि वह अपनी उस एबिलिटी पे काम करेगा तो वह लाइफ में ज्यादा सेटिस्फाइड और सक्सेसफुल होगा. लेट मी एग्जाम्प्लीफाई इट. यदि आप म्यूजिक में बड़े अच्छे थे बट आप एक मैथ्स टीचर हैं और आपको हमेशा ये दुख रहता है अरे यार हम ना म्यूजिक नहीं सीख पाए. सो आप मैथ्स टीचर बहुत अच्छे होंगे, आप चीजें बहुत अच्छी बताएंगे पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन आपका लाइफ सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट जब हम मल्टीपल इंटेलिजेंस का अप्रोच यूज करते हैं. थर्ड इज इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल एंड काइनेस्थेटिक एबिलिटीज लाइक engage in family discussions about emotions and support gardening interest. The fourth, which is also important, is identifying and supporting different abilities, like discuss artistic and musical talents, emotional intelligence, self reflection, and physical activities. So, this is very important in the approach of multiple intelligence. Now, uh, like what you can do to support what you can what are the ways to help and support your child.
This is I feel is very important because like somewhere when you really try to help your child, it is important to understand that when you do not provide support, the child cannot grow. What kind of support you can provide? So the very first and a very simple approach is balancing guidance and autonomy. Allow children to choose extracurricular activities while providing guidance and support. Second is parenting approaches, like create a supportive environment at home with designated spaces for various activities like reading, art, or physical activities. So, when you provide support to your child, the child grow, the child understand, and the child get a good opportunity to somewhere grow in life. So this is important, and when you really take care of this somewhere help you know the thing practical strategies, what you can you know use. So the practical strategies talks about exposure and skill development, like broaden children's horizons through museum visits, cultural events, or volunteering opportunities, and communication and active listening, like emphasize open communication and listening to children's ideas, concerns, and aspirations. Engage in regular family discussions. हम लोग कहते हैं परिवार की चीजों में तुम बोलो मत, और बाद में हम कहते हैं अब इस परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे जिसने परिवार के डायनेमिक को नहीं समझा, जिसने परिवार के स्टाइल को नहीं समझा, जिसने परिवार के पैटर्न को नहीं समझा, वह बेचारा कैसे हैंडल करेगा? आई रिपीट, हम कहते हैं कि परिवार की बातों में बीच बीच में मत बोलो, और बाद में बड़े होने पे कहते हैं अब ये परिवार तुम्हारा और अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो जिसने परिवार के डायनेमिक को, परिवार की चीजों को, परिवार के पैटर्न को नहीं समझा, वह परिवार को कैसे अच्छे से हैंडल कर पाएगा? वह उस काम में उतना ही नया होगा जितने नए आप करने में थे। सो दिस इज समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड बच्चों को मौका दीजिए। हम लोग कहते हैं घूमोगे बर्बाद होगे, बिगड़ जाओगे। नहीं, घूमना भी बहुत जरूरी है। इन व्हाट सेंस? उसको उस जगह पे ले जाइए जहां पर घूमने के बाद उसका कोई आउटकम, यदि बच्चा मंदिर भी जाता है तो आप उससे कुछ प्रश्न जरूर पूछिए कि बेटा मुझे इस जगह के बारे में कुछ ऐसी चीज बताओ जो मुझे पहले कभी नहीं पता चली, और आपका बॉन्ड उससे अच्छा होता चला जाएगा। मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये आपके लिए भी एज अ पेरेंट और आपके पेरेंट के लिए भी एज अ पेरेंट बहुत हेल्पफुल है। सो आप इस पे बात कर सकते हैं। म्यूजियम विजिट, जब भी लोग किसी सिटी को घूमने जाते हैं, खूब सारे मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, खूब सारी चीजें देखते हैं, बट उनको उसके बारे में जो चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उस पर रिसर्च करने का टास्क दीजिए। उसको किसी कल्चरल इवेंट में ले जाइए तो डांस के भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक और जो है फोक, इस तरीके के कैसे अलग अलग पैटर्न्स हैं उसको समझाइए। हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से बढ़ता है। यदि आप नॉलेजेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, वैसे वैसे आप स्किल्ड होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप स्किल्ड होते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके अंदर आपका हुनर जो है वो आपके व्यवहार और व्यक्तित्व से बोलने लगेगा। सो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। और बच्चों के साथ कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग का तो एक बहुत स्पेसिफिक रोल होता है कि कहीं ना कहीं आपको उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करना है। देखिए, ओपन कम्युनिकेशन का मतलब हम किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बात करना शुरू कर देंगे नहीं होता है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बात बच्चा बोले, उसको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अंडरस्टैंड करके उसकी थिंकिंग को एक सही डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करेंगे। वहां पे ओपन कम्युनिकेशन हेल्प करता है। सो इस एरिया को सोचना समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, और इस एरिया पे आपको कहीं ना कहीं बच्चे को रेगुलर फैमिली डिस्कशंस में इन्वॉल्व करना चाहिए। सो दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ।
जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का चार्ट कहता है वो बेसिकली आपको यही चीज बताता है, और इसी चीज पे आपको कहीं ना कहीं उसके साथ अप्रोच यूज करना है. सो like verbal linguistic intelligence, so using language to present your ideas, to express your feelings, or to persuade others. Logical mathematical intelligence, so reasoning, logical thinking, handling mathematical problems. Visual spatial intelligence, so ये basically जो इंटेलिजेंस के टाइप हैं, इस बेसिकली ये 8 टाइप पे बात करते हैं. सो थर्ड इज विजुअल एंड स्पैशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे creating and interpreting visual images, thinking in 3 dimensions. Fourth is bodily kinesthetic intelligence, like feeling of expressing things physically, doing hands-on work. Rhythmic intelligence, creating and feeling a rhythm to express a mood, detecting and analyzing musical themes. Intrapersonal intelligence, within the self, understanding your own interior thoughts and feelings in a very clear way. Interpersonal intelligence, between people, understanding the feelings, needs, and purposes of others. Naturalist intelligence, understanding nature, seeing patterns in way nature works, classifying things. So these are important things which multiple intelligence talks about. जब आप multiple intelligence के approach से पढ़ेंगे तो आपको अपने बच्चे की स्पेशल एबिलिटी समझ में आएगी. लेकिन जब आप मल्टीपल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मेरे बच्चे में वो एबिलिटीज नहीं है जो मेरे अंदर हैं. और ऑफ कोर्स एक माता पिता के 10 संतानें यदि हो तो वो 10 की 10 संतानें 10 अलग क्वालिटीज की होती हैं, और उनकी क्वालिटीज एक दूसरे से कुछ कुछ मैच कर सकती हैं, बट वो आइडेंटिकली एक जैसे ही होंगे इसकी संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है. सो दिस इज समथिंग विच टू बी टेकन केयर ऑफ while टॉकिंग टू पेरेंट्स स्पेशली. Yeah. So I just explained you the concept of multiple intelligence. Now, how we can inculcate the ability, how we as a teacher can inculcate the ability in a child by using the multiple intelligence approach. So let me put some light over it so that I can give you a clarity of the thoughts and the ideas, and you can somewhere, help your children. You can help the children inside your class as well. So, the multiple intelligence approach, it recognizes different types of intelligences in individuals. As a teacher, you can, leverage this approach to foster diverse abilities in students. So, first thing which you have to really work upon is the very first thing which you have to really work upon is uh, identify individual strength. Identify individual strength. So, what you can do in identifying individual strength? So, observe and assess each student to identity their unique strength, and intelligences. This may include linguistic, logical, mathematical, spatial, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalistic, or bodily kinesthetic intelligences. Number two is diversify teaching methods. So try to make your teaching methods to cater to different intelligences. For example, incorporate visual ads for spatial learners, group activities for interpersonal learners, or hands-on task for bodily kinesthetic students. So this will somewhere help. Third is like provide varied learning materials. Like offer a range of learning materials, including books, multimedia, hands-on activities, and discussions. And this accommodates, different learning styles
and intelligences. Also encourage collaboration, like foster collaborative learning environments where students with different strength can work together. This promotes, interpersonal intelligence, and it allows, to each student to contribute based on their abilities. Next thing which you can do is offer choices. Yes, allow students to, mm, choose projects or assignments that align with their preferred intelligence. Providing options promotes autonomy, and it encourages them to, engage with their strengths. Next thing which you can take care of is integrate art and creativity. So incorporate artistic and creative elements into lessons. This can appeal to students with musical, visual, or spatial intelligences, and it will foster their abilities. You can use real world applications, like relate lesson to real world scenario to connect with students who excel in practical hands-on intelligence. This helps, them to see the relevance of what they are learning. So this is another thing. And try to provide like multiple assessments, like use a variety of assessment methods, and such as you can use projects, presentation, quiz, of course, quiz and discussions. And this will somewhere, it will accommodate diverse intelligences and allows students to showcase their understanding in different ways. Also promote reflection, like encouraging students to, reflect on their learning styles and intelligences. This self awareness can help them recognize their strength and areas of for growth. Also create an inclusive environment, like try to foster a classroom culture that celebrates diversity in intelligence, and emphasize that each type of intelligence is valuable and everyone has unique strengths to contribute. So by embracing, the multiple intelligence approach, you create an inclusive and personalized learning experience, that support each student's individual abilities and help them thrive in various aspects of intelligence. So this is what is the discussion for today. um, I just come with the question and answer round. You have 5 minutes left. You can ask any question which is which you feel is helpful, and promise I'll surely try to answer as per best of my knowledge. So any question? Thank you so much for all the positive feedbacks there in the discussion. I just would like to request you to please feel free to write your questions in the chat box so that I can answer your questions. Any questions, any doubt, anyone, feel free to yes. I'll just take this small screen, this thing, so that I can just edit and records. Yes. So I open the question and answer this thing. Anyone who would like to ask any question, any doubts, any thoughts, if you want to really ask something related to multiple intelligence approach, how you can tell this concept to parents and how parents can use this. Anyone, any doubt, any question? Thank you for all the positive comments and feedbacks in the chat box. It's all God's grace, and I pass this completely to the Almighty who chose me to be here for the day in the session. Thank you so much. And thank you so much for all the positive comments in the chat box. Thank you so much, everyone. Yeah. There's a question how to handle dull kids. I have a question.
The child is dull, or the person, the family and the school and the teacher are not capable to understand that like what is the ability of the child, because Newton himself was sent back to home and was told to her mom that is not a right person to study in the school. So yes, think from the multiple intelligence perspective. Let me see if I can find any other question. uh any other question. Please put your questions there in the chat box. I'm just looking for questions. If you can put. Okay. After watching horror movies, one of my students fell into deep depression. How we can bring him back? Listen, depression is not something which is one day friction of second ka job, that a child went into depression after just watching a movie, something like that. Maybe the child emotionally connected something to it. The very simple technique I would recommend: you ask the child to share the apprehensions and the thoughts the child has in her or in his mind. That's it. The more the child will talk about it, what he or she felt, what was something good, what made him or her feel bad, what they understood and all, the more it will come out of it. And depression is not something which can generate like this, just with chutki bajaye depressed ho gaya. It's not like that. The child may feel sad, the child may feel bad. That's a different thing. So don't get much into this thing. And yes, how to convince parents if the child is facing some issues physically or mentally, but the parents are not believing that? Take the help of your school counselor. Ask the parents to speak to a psychologist or a counselor. जब उनको पेट दर्द है, उनको कोई दिक्कत है, उनको परेशानी है, तो वो किसी फिजिशियन से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? In the same way, if the child is having any concern, any problem, they can approach to a psychologist. The psychologist can help with that. So there's nothing like that. You can just recommend them to visit to a psychologist. Very good. Uh, Somebody has written, we are planning so much activities to developing multiple intelligences, but it's quite difficult to educate parents the importance of those activities. They only want academic excellence. How can we plan some programs involving parents? You invite an expert to talk about it. See, when you are talking as a school person, what will happen? They will think, अरे स्कूल का अपना कोई तरीका है, just to make us you know uh, cheat us or something like that, जो parent politics होता है. Don't get into it. We just invite someone who is a professional psychologist or a professor or someone who can tell them that what is the concept of multiple intelligence in a good way. So once they get to know about it, they will use approach about it, and they will be happy to send their children with for the such approaches. But if they themselves are not very clear at this, it will create some issues. And principal talking about it, teacher talking about it, they take it कि अरे तो स्कूल के ही लोग हैं, तो स्कूल के ही जान पहचान के लोग हैं, स्कूल के ही बात करने वाले लोग हैं. So it doesn't make any sense. So invite someone who can give them time and things for that. Chaliye. Thank you so much for all your warm wishes, for all your support, and thank you so much for being here. We had a good time together. Thank you for coming, and thank you so much. Namaskar.